गो टू ट्रांजेक्शन बीपी। जैसे अभी हमारा कंपनी कोड मान लीजिए एलजी वाला है, इफ़ वी जस्ट क्रिएट सम कस्टमर फॉर दैट। सो एलजी हमने जर्मनी के लिए यूज़ किया था, तो लेट्स क्रिएट सम कस्टमर फॉर जर्मनी। हाँ, तो सबसे पहले वी विल सेलेक्ट वेदर वी आर क्रिएटिंग अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। So in most of the cases it will be organization, this will be selected। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन किया। सो लेट्स फर्स्ट क्रिएट इन दिस रोल, दिस इज माय जनरल रोल। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे रोल्स दिख रहे हैं बट ऑल आर नॉट रेलिवेंट टू एसडी। सो ओनली फोकस ऑन रोल्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग। और रियल टाइम सिस्टम में व्हेन यू विल वर्क यू विल नॉट सी दीज मेनी रोल्स, इट विल बी लिमिटेड, यू विल ओनली सी 2 3 रोल्स विच आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर। तो जैसे एक हम कस्टमर क्रिएट करते हैं, जैसे जर्मनी में टेस्को करके एक सुपरमार्केट है। तो जैसे मैंने क्रिएट किया टेस्को सुपरमार्केट फ्रैंकफर्ट। ठीक है, जैसे अपने यहाँ बिग बाज़ार वगैरह है, देर एक टेस्को करके है वहाँ पे। सो इसका मैंने नाम डाल दिया, टाइटल में कंपनी आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कंपनी। सर्च टर्म में वी कैन एंटर। ठीक है, दिस इज। सो लेट्स से हमें इससे ऑर्डर आया है, उनने कुछ नया स्टोर ओपन किया है एंड दे वांट some LCD panels from us। So then we are creating this as a customer। तो फिर उसका हम एड्रेस डाल देंगे, some postal code। ओके, सिटी आपकी जैसे यहाँ पे आ जाएगी फ्रैंकफर्ट। देन यू हैव टू एंटर दिस कंट्री, रीजन इसमें से कोई भी एक ले लेंगे, फ्रैंकफर्ट का कौन सा है इसमें। ओके, लेट मी टेक, एक ले लेंगे रीजन। So now we have entered some basic details and let's try to save this। So we have created a business partner and this is my business partner number। ठीक है, अभी हमने बिजनेस पार्टनर क्रिएट किया है, ओनली जनरल डेटा क्रिएट किया है। जनरल डेटा मींस उसका कुछ बेसिक डेटा क्रिएट किया है, बट इसको अभी हम इसका ऑर्डर वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज सेल्स रोल इज़ नॉट मेंटेन्ड एंड कंपनी कोड रोल इज़ नॉट मेंटेन्ड। तो हमारे पास एक कोई नया कस्टमर आया, हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सो वी हैव क्रिएटेड वन कस्टमर इन एसएपी, but this is not yet complete, we have to maintain SD and FI roles before we start using this in sales transactions। So next step will be to extend this। Yeah. No, no, these are all already available standard roles। No, we will not create this. If required, your sales team or sales consultants will copy the standard rules. They will create a ZFLCU01, something like that. But role standard rules will remain same. For testing, you can just use the standard ones. Okay. So like if you see, standard rules are your 0001. Okay, let me just note it down here also. So my standard rules, one is your this 06 times. This is my general data rule. Then you have FLCU00, this is company code role. And then FLCU01, this is my sales role। So these three roles you focus, we should focus on these three roles. Other roles are related to other modules। Okay. Yeah. Then yeah, let's extend this to say company code role। So what I will do, I will go select FLCU00, and here so basic details will be copied from your general role, already it will be copied।
And then here if you want to maintain some additional information, okay, like language here is mandatory, so en maintain English. And then any other details if these are needed. Required language field has no entry, but okay, I have entered it now. Then okay, so these are all optional entries. Okay, here in account group we can see general data, we can see which account group it is linked to. What is account group, that I will explain in a bit now. But in this field we can see कि account group हमारा कौन सा linked है. And okay, then go to company code view. And now here what we are doing, we are extending our customer, our business partner to company code. So LG, let me search my company code. Okay, so this is my company code. And okay, this is a reconciliation entry account. This is a mandatory entry. So this account will be provided by your FI team. Basically, it will tell that in which account this entries will be posted. So 1400 like receivables domestic. So all the domestic sales will be received in this particular GL account. The GL account is your general ledger account. This is given by FI team, and it is a kind of, you can say, like you have bank account where all the money is deposited or credited. So in finance they have this GL account concept, wherein your money will be wherein your posting financial postings will be done. It will be credited or debited depending upon the scenario. So this is my reconciliation account. So this your FI team will provide. We will enter that here. And in fact, this whole view, the customer view, finance view will be maintained by finance team. Here we are doing for our own learning, but in real time it will be maintained by your FI team. So then we can save this. Customer is from EU customer, enter VAT registration number. Okay, so since this is a EU customer, we have to enter some VAT registration number. Okay, we can just skip this message. So now if you see, we have created, this customer is created in the background. So my business partner number that we created is this one, and customer number that we created is this one. Okay, so numbers are different in both the scenario. Now there is a configuration that if we do, then these two numbers will become same. Okay, so that I will show you. So once we do maintain that configuration, then your business partner number and your customer number both will be same entities, and usually they will be same. So as per SAP, we should keep the same. Okay. So now let's what we will do, we will extend the sales role. So your basic details is already copied from your general data, and go to your sales and distribution data and enter our sales organization. Let's search for our organization. So LG00, let me select this sales area. So sales area wise, we have to extend this customer. Now, okay. So this sales area I have entered here. Okay, sales district. This is not mandatory. This field we can make it optional in background. So here it is, we will maintain some, if some entries are there, we can maintain here. And then you can maintain if any sales office, let's say we have done this sales from Frankfurt sales office. And after that sales group we can maintain here, let's say Frankfurt sales team.
Okay, so this sales district, let's say we want to further subdivide our sales region. So your sales office might be dealing with different districts, different regions within that area. So we can divide, further subdivide in terms of sales district. जैसे मान लीजिए आपका you have some office in let's say Mumbai, and then that is further and you have one sales team in Mumbai, but you are doing sales in different region. आप पुणे में भी सेल कर रहे हो, then you are doing sales in लेट्स से नागपुर, आपके अलग अलग लोकेशन वाइज दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं. सो दैट सेल्स डिस्ट्रिक्ट, इफ यू वांट टू कैप्चर दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, देन वी कैन मेंटेन इट. या फिर जैसे हमने स्टेट को रीजन वाइज डिवाइड कर दिया कि नॉर्थ महाराष्ट्र, साउथ महाराष्ट्र, ईस्ट वेस्ट, लाइक दैट. इफ यू फर्दर सब वांट टू सब डिवाइड, देन वी कैन यूज सेल्स डिस्ट्रिक्ट. बट दिस इज अ ऑप्शनल एंटिटी. इसका सो इट इज़ नॉट यूज्ड एवरीवेयर, इट इज़ ऑप्शनल. ओके सो ओके सो यहाँ पे इसमें मैंडेटरी में आ रहा था, बट सम कॉन्फ़िगरेशन समवन माइट हैव चेंज्ड इट. वी कैन अगेन मेक इट ऑप्शनल इन द कॉन्फ़िगरेशन. ओके, देन कस्टमर ग्रुप हम मेंटेन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लाइक व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर ग्रुप इट इज़ योर बल्क कस्टमर या होलसेल कस्टमर. अगर कुछ हमारा कस्टमर ग्रुप्स वी आर यूजिंग, देन वी कैन मेंटेन इट. फिर किस करेंसी में हम डील कर रहे हैं, सो दिस इज माय ईयूआर करेंसी, ऑटोमेटिकली हैज पिक्ड फ्रॉम दैट कंट्री, डीई कंट्री. फिर प्राइसिंग ग्रुप अगर हम कुछ मेंटेन कर रहे हैं, दैट वी कैन मेंटेन. तो जो जो मैंडेटरी डिटेल्स है दैट वी विल मेंटेन. कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, दिस इज रेलेवेंट फ्रॉम प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो वी विल सी दैट टाइम. सो अभी जैसे शिपिंग कंडीशंस में, गो टू शिपिंग टैब. यहाँ पे वी विल सी डिलीवरी प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी है कस्टमर की, हाई, normal item, high customer. Okay, so delivering plant we can maintain here. Okay, we can maintain delivering plant in your CMIR and in master data. So I've explained the sequence in which how it is picked in in your sales order. Shipping conditions we can maintain here. So shipping conditions क्या होंगी? Shipping conditions can be like standard है या pickup है, तो different shipping conditions will be there. And then you have billing. Here you have incoterms. So incoterms जैसे X work, you have free on board, X works. So this is basically your you can say shipping या delivery related terms होते हैं, स्टैंडर्ड बिजनेस में यूज़ होता है. जैसे कि अगर मैंने मान लीजिए CFR सेलेक्ट कर दिया, तो इसमें इट विल बी लाइक कि कॉस्ट एंड फ्रेट विल बी बियर्ड बाय कस्टमर. CIF जैसे कर दिया तो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट विल बी बियर्ड बाय कस्टमर. सो एक्स वर्क है, जैसे मैंने आई हैव मेड माई गुड्स अवेलेबल इन माई फैक्ट्री, नाउ कस्टमर कैन पिक इट फ्रॉम हियर. सो अलग अलग इनको टर्म्स होते हैं, सो दैट वी कैन यूज़. ओके, सो आप इनका इनको टर्म्स में नेट में जाके भी यू कैन रीड अबाउट दीज. These are used as per the business terminology. They have these are listed here. जैसे एक्स वर्क मैंने कर दिया कि माई गुड्स आई विल मेक अवेलेबल एट माई वेयर हाउस और एट माई लोकेशन. तो जैसे हमारा एंड कस्टमर विल पिकअप फ्रॉम देयर. या फिर वी कैन सेलेक्ट कॉस्ट एंड फ्रेट. कॉस्ट एंड फ्रेट एंड कॉस्ट एंड फ्रेट विल बी बियर्ड बाय कस्टमर. हमें इसमें सिटी डालना पड़ता है कहाँ से ये एप्लीकेबल है. तो फ्रैंकफर्ट में लेट से योर वेयर हाउस इज इन दिस. ओके, आई थिंक एक्स वर्क्स में डालना पड़ेगा. नाउ टर्म्स ऑफ पेमेंट. टर्म्स ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा? इमिडिएटली पेबल है, और देर आर सम अदर की 30% आफ्टर 15 days, रिमेनिंग पेमेंट आफ्टर 15 days, like that. So different payment terms will be available. So let's say immediately payment is due. Credit control area, if credit management is active, then it will be used. Okay.
Okay. Now here we have to, yeah, this is one more field. So here we will maintain which kind of customer it is, whether it is domestic customer or foreign customer. So let's say domestic revenue. This is my domestic. This posting will be done to your domestic account, and whether it is relevant for taxes or not, it is relevant for taxes. Then here you will see all the partner functions. By default, these four partner functions will be created for every customer. So what this implies ki this is my sold to party, this is my sold to party, and same number will be copied initially, but if we want to change later on, then हम यहाँ पे इसको change कर सकते हैं. हमें फिर ये पार्टनर क्रिएट करना पड़ेगा. जैसे हमें बिल्ड शिप टू पार्टी यहाँ पे अलग अलग दो तीन शिप टू पार्टी असाइन करनी है. मान लीजिए हमारी डिलीवरी साइट्स, वी हैव थ्री डिफरेंट डिलीवरी साइट्स. सो बीपी वी हैव टू क्रिएट two more BPs for this, and then we have to link here. फिर हमें मास्टर में आके हमें लिंक करना पड़ेगा यहाँ पे. सो देन टेक्स्ट अगर कुछ है, वी कैन मेंटेन हियर स्टेटस. If we want to block some order at the sales order level, delivery block, billing block, so different fields are there. So then we can save this, and then my customer is this is my business partner number, and my customer is now extended to your sales view, and to your sh- also to your company code view. So now, so what we have learned that transaction is BP. In BP we can create three types of customers. We have seen creation of this organization one. Creation is same for person and group. ठीक है. अगर कोई पर्सन सेलेक्ट करना है, एवरी स्टेप्स विल बी सेम. सेलेक्ट योर ग्रुपिंग. फर्स्ट क्रिएट इन zero, all zero role, then create in FLC U00 role, which is your FI customer, and then create in your FLC U01. Okay, how to remember? Like first is 0, then double 0, then 01. So these three roles are required. So you can create some contact person, some for few. You can try creating BP for person, group, organization. Just do some practice. Now let me